तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज समर्थ। और जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो के लिंक में, we'll be discussing junction transistors and more on the transistor part and the gates part. कि what are the different type of gates do we have in semiconductors और कैसे वर्क करते हैं, तो उसके ऊपर वर्क करेंगे आज अपन। देखते हैं फर्स्ट इज जंक्शन। तो जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? वी हैड स्टडी ट्रांजिस्टर्स पहले क्या होते हैं, राइट? वी हैड स्टडीड कि उनका वर्क फ्लो कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। तो जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो जंक्शन ट्रांजिस्टर इज आर नथिंग but a PNP transistor. What do you mean by PNP? यानी कि there PNP, like when you have a transistor जहाँ पे एक PNP का ऑर्डर फॉलो होता है, यानी कि यहाँ पे एक P डोप्ड वाले सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे N डोप्ड सेमीकंडक्टर एंड सिमिलरली P डोप्ड। So इसमें क्या होता है? There is a particular definition and the way of solving a junction transistor. They have different names. तो देखते हैं अपन, जैसे कि फर्स्ट में दे रखा है that when you solve this is the representation of a junction transistor. What does it look like? And emitter किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, कलेक्टर किसको बोलते हैं? So there are things that you remember. So इसमें ऐसा होता है कि this is the representation part, the arrow parts is the emitter part, and this is the base, this is the collector, this is the emitter, and this is the base. This is the PNP transistor. ठीक है? अब सिमिलरली अगर PNP है तो एक एनपीएन भी होगा, व्हाई नॉट, राइट? तो एनपीएन भी सिमिलर बेसिस पे वर्क करता है। सी दे हैव शेयर द सेम डायग्राम है, बट दैट्स रॉन्ग। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव। अब इसका वो देखते हैं कि वर्क कैसे करता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेकर देखते हैं। तो दिस इज द वर्क फ्लो दैट वी हैव। यहाँ पे एक फॉरवर्ड बायस के अंदर है और यहाँ पे एक रिवर्स बायस में। ठीक है? इसको आप कैसे देख सकते हो? इसका जो सपोजिट बन रहा है बैटरी साइंस, बट दैट्स फाइन। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कैसे पता लग रहा है हमें? बिकॉज जो पॉजिटिव साइड है वो पी से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव साइड है वो एन से कनेक्टेड है ऑफ द बैटरी। एंड फॉर दिस ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस कैसे पता लग रहा है? पॉजिटिव साइड इज बीइंग कनेक्टेड to the n part and the negative part is connected to the p part, right? अब इसका अपन करंट के वैल्यूज देखते हैं कि हाउ डज द करंट वर्क। अब देखो, ट्रांजिस्टर में एक आई ई करंट जा रहा है और दो करंट बाहर निकल रहे हैं, तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इन एनी केस, राइट? अब देखते हैं, एक बार थ्योरी हम पढ़ना चाहे तो हम पढ़ सकते हैं कि वर्किंग कैसे होती है। आई रीड इट थ्रू फॉर यू गाइस। अब कॉमन बेस सर्किट ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज शोन इन द फिगर, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। अब देखते हैं, होल्स आर द चार्ज कैरियर्स विद in the PNP transistor, while electrons are the charge carriers in the external circuit. ठीक है? PNP ट्रांजिस्टर के अंदर होल्स क्यों होते हैं, मेजर चार्ज कैरियर्स? बिकॉज यू नो देयर आर टू मेजॉरिटी ऑफ पी डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, और हमें पता होता है पी डोपिंग के अंदर होल्स ज्यादा होते हैं, राइट? वी हैव अ लार्जर नंबर ऑफ होल्स हियर। तो इसके लिए क्या होता है, होल्स हो जाते हैं हमारे मेजर चार्ज कैरियर्स, right? A small current which leaves the base terminal is called IB. छोटा करंट होता है जो बी बेस में जाता है। एंड मैक्सिमम जो करंट होता है वो कलेक्टर करंट होता है, जो कलेक्टर टर्मिनल से बाहर निकलता है। सो बोथ दीज करंट combine to enter the emitter terminal and constitute the emitter current, this। ठीक है? The base being very thin, the number of holes electrons combination in it is very small. Almost all the holes entering the base from the emitter reaches the collector. इसका मतलब क्या है? ये जो छोटा सा रीजन हमने बनाया था एन का, उसके अंदर जितने होल्स निकलते हैं उतने बाहर निकल जाते हैं, right? क्योंकि वो बहुत थिन है। तो वहां पे एप्रिशिएबल चेंज इन नंबर हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद क्या करते हैं, hence the collector current IC is only very slightly less than I। क्यों? क्योंकि आपका जो बेस करंट है वो काफी स्मॉल है। And now coming back to the NPN junction, या NPN ट्रांजिस्टर, इसकी वर्किंग देखते हैं एक बार।
इसमें कैसे होता है, ये जो इक्वेशन है दोनों के लिए वैलिड होती है, राइट? दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ, बट सर्टन थिंग्स चेंजेस। उसमें क्या होता है, द current known as a common base circuit of NPN is shown here. Okay, सर्किट है, सर्किट लिखा है, सर्किट का रिप्रेजेंटेशन शो किया है, बट द रॉन्ग सर्किट यार। तो देखते हैं वापस, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स क्यों होंगे? क्योंकि बिकॉज वी हैव NPN here, right? This is NPN. तो N is यानी कि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स आर कैरियर्स, एंड जो बेस होता है वो थिन होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद as well as the external circuit whereas the holes are the charge carriers within the PNP transistor. The small current entering the base terminal B is the base current IB, while the larger current entering the collector current C is the collector current. Okay. Okay, this is the similar that we had studied earlier. एक बार एक्शन में देख लेते हैं क्या होता है, कि कैसे वर्क करता है कैसे नहीं। ये हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज एम्पलीफायर्स। तो देखते हैं व्हाट डू वी ट्राई टू से। ट्रांजिस्टर्स वी हैड ऑलरेडी सीन इन एप्लीकेशन, राइट? कि ट्रांजिस्टर्स कैसे एम्पलीफायर की तरह होते हैं, बट अब देखते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर हो पाता है या नहीं। सो लेट्स सी। अ जंक्शन डायोड कैन नॉट एम्पलीफाई अ सिग्नल। A transistor consisting of two PN junction, one is forward and the other is reverse, can however be used as amplifying a weak signal. And weak signal, the forward bias junction has a low resistance path, whereas the reverse bias has a high resistance path. ये अपन को पता है कि जब फॉरवर्ड बाय होता है तो लो रेजिस्टेंस होता है, राइट? वी हैव इजी मूवमेंट। बट अगर जब रिवर्स में होता है तो हाई रेजिस्टेंस होता है, मोर नल के अराउंड करंट पास होता है। So the weak input signal is applied across the forward bias junction, and the output current signals are taken up as much of higher voltage. क्या होता है, अगर आप कुछ फॉरवर्ड बायस में वाला डालते हो कम करंट में, सी आई इज इक्वल टू वी बाय आर, राइट? तो हमें वोल्टेज चेंज करना है ना, तो करंट तो सेम रहेगा। तो देखो, अगर करंट सेम है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो अगर इनिशियली वोल्टेज कम है तो रेजिस्टेंस भी कम था, बट जैसे ही वो करंट पास होगा आगे, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज को भी बढ़ना पड़ेगा, राइट? सो हियर व्हाट डू वी गेट टू नो इज दैट ट्रांजिस्टर या जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनको एक एम्पलीफायर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज रिवर्स बायस के अंदर हमें हाई रेजिस्टेंस मिलता है। दिस वी ऑलरेडी डिड। कॉमन बेस एम्पलीफायर की तरह कैसे होता है, गेन्स इन कॉमन। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देखते हैं, दिस इज ऑल्सो नाइस टू रिमेम्बर। नाउ गेन्स इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर सी, इफ यू वांट आई कैन गो थ्रू द वर्किंग ऑफ दिस, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप देख सकते हो, आई कैन लाइक यू कैन रीड इट फॉर यू गाइस एज वेल, मतलब खुद से रीड करके देख सकते हो ये डायग्राम में कैसे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है एक एम्पलीफायर, तो आप इजीली देख सकते हो। आई जस्ट गो थ्रू स्किम थ्रू द फॉर्मूलाज बिकॉज वी जस्ट डू सम क्वेश्चंस आल्सो इन द लेटर पार्ट ऑफ द क्लास। तो देखते हैं एसी करंट गेन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन द एमिटर करंट एज अ कांस्टेंट collector to voltage and is denoted by alpha. Thus, the value of alpha is slightly less than 1. Okay. क्या कि जो चेंज होता है कलेक्टर करंट में, उसका रेट टू द चेंज इन एमिटर करंट, यानी कि चेंज इन IC बाय चेंज इन IE, राइट? तो ये हो गया हमारा एसी गेन। हम क्यों चेक देख रहे हैं, हमें पता है कलेक्टर करंट के अंदर बहुत माइन्यूट से चेंज आता है। Sorry, not the change, but I'm saying it is almost equal because we know that IE is equals to IC plus IB, and IB is almost tending to zero and all like have a very less value, तो कम चेंज आता है, राइट? अब देखते हैं वोल्टेज गेन क्या होता है। वोल्टेज गेन के अंदर आप इसमें क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वी गॉट आवर वैल्यू। एंड पावर गेन इज करंट गेन का होल स्क्वायर, या फिर नॉर्मल गेन का होल स्क्वायर बाय
into resistance, current gain का whole square into resistance gain, very simple. उसके बाद पीएनपी के अंदर ये अभी हम पढ़ रहे थे एनपीएन के लिए, तो पीएनपी के लिए ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस एम्पलीफायर कैसे वर्क करेगा, सिमिलरली वर्क करता है, नथिंग ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट यहाँ पे डीसी करंट जाते हैं, ठीक है, वहां पे एसी करंट था, यहाँ पे डीसी करंट है, कैसा पता लग रहा है हमें, ये देखो, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी गेट इट। सो मूविंग ऑन, देखते हैं आगे क्या दे रखा है। गेन्स इन कॉमन गेन, डीसी करंट का गेन है, एसी करंट का गेन है, वोल्टेज गेन है और एसी पावर गेन है। Now we also have relations between alpha and beta, कैसे होते हैं अल्फा बीटा के रेंज रिलेशन, इसको याद करना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि करंट गेन कैसा होता है और कलेक्ट सी करंट गेन कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। सीबी करंट गेन अल्फा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। मतलब इनपुट हम क्या देते हैं, कलेक्टर, और आउटपुट में क्या देते हैं हम, सॉरी, आउटपुट में क्या देते हैं, कलेक्टर, और इनपुट में क्या देते हैं, एमिटर। तो अल्फा ए सी इज इक्वल्स टू चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट, और अल्फा डीसी इज कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट, राइट। नेक्स्ट करंट गेन में क्या होता है, मतलब देयर कुड बी सम इश्यूज हियर, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो सकते हैं इश्यूज, बट लेट्स लेट इट बी एंड मूव ऑन। Yeah, I'll suggest you to confirm it that for beta and alpha, which values beta is for base and alpha is for emitter, or it is the other way around, because here they have written base and taken I, and here they have taken emitter and taken B, so there might be a switch up। एक बार इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है, जब रिवाइज करो तो। नाउ मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन लगाते हैं। सो रीड करते हैं क्वेश्चन को। डीसी करंट गेन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन is 0.099, sorry, 0.99, find its DC current gain in CE configuration। CE configuration मतलब emitter configuration में, तो हमें पता है करंट गेन कितना होता है, दिस, और हमें पता है ये कितना था, सीबी यानी कि बेस कॉन्फ़िगरेशन है, हमें पता है 0.99 है, हमें ये भी पता है। तो मैं आई बी को क्या लिख सकता हूँ, आई ई माइनस आई सी, यानी कि 1 अपॉन आई ई आई सी माइनस 1, यानी कि 1 अपॉन 1/099 माइनस 1, मतलब 99/100 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 99। तो बीटा बिकम्स 99, राइट। समझ आया, कैलकुलेशन बहुत आसान सा था। तो स्विच अप, सॉरी फॉर दैट। सो बेसिकली स्विच अप नहीं है, एमिटर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मतलब हमें बेस और कलेक्टर करंट का लेना है, और बेस कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मतलब कलेक्टर और एमिटर का लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इन अ सर्टेन रेजिस्टेंस अल्फा डीसी इज इक्वल टू 0.98 and alpha E is equals to 1 micro milliampere. Find the corresponding values of the base current and the collector current। तो बहुत आसान है ये। हमें अगर अल्फा डीसी पता है, यानी कि क्या पता है, आई सी बाय आई, अल्फा इज फॉर एमिटर, तो यहाँ पे ये आएगा, अल्फा इज फॉर बेस, राइट। जस्ट चेक कर लेते हैं वहां पे से एक बार डेफिनेशन में। अल्फा इज फॉर बेस, यस,
ठीक है, तो ये हमें दे रखा है 0.98। आईसी क्या हो जाता है 0.98 मिली एम्पियर। तो आईबी क्या हो जाएगा 0.02 मिली एम्पियर। और हमें निकालना है बीटा डीसी, राइट? नहीं निकालना, हमें सिर्फ वही निकालना था। तो वे गॉट आवर वैल्यूज। Yes, this was the question we were solving. And 23rd is very similar, direct formula. आगे देखते हैं this topic. Transistor, oscillator, transistor switch. These are basic concepts जो आप read कर सकते हैं. Now we come on logic gates. See, logic gate is a very important topic for JEE mains and advanced, and especially for mains, because ऐसा कई बार हुआ है कि logic gate से question आ जाते हैं. तो I would suggest you उसको एक बिल्कुल भी lightly नहीं लेना है. It can help you. Also, there are some properties जो लेंदी switch gates को smaller बनाने में काफी help कर सकती है. So I would suggest you कि वो वाली methods भी देख सकते हो एक बार आप solve करने से पहले. अभी देखते हैं इसकी फर्स्ट लॉजिक गेट हमारा डायग्राम कैसा है कैसा नहीं है, उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेट कैसे कर सकते हैं. बिकॉज बेसिकली लॉजिक गेट्स आर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन और प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड. बट उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा आसान हो सकता है कभी कभार. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ लॉजिक गेट देखते हैं. अगर लॉजिक गेट का और इजी मतलब समझना हो तो वी कैन रीड द डेफिनेशन. लेट अस सी व्हाट द डेफिनेशन सेज. That a logic gate is a digital circuit which is based on a certain logical relationship between the input and the output of the signal obtained, right? Of the voltage of the circuit. Okay. Output voltage of the circuit. मतलब basically क्या how does a digital circuit work, ये हम बताते हैं logic gate. ठीक है, so there are number of logic gates that we have in our real life as well. For example, in cycle also we have a logic gate that's work very efficiently. In our hands bending, neck bending, this is a format of a logic gate. But these do not produce large amount of calories, if I say so. So let's see how does it work through and how does it not. So recent way it had happened that logic gates have become a frequent topic to be asked in JEE means. So we can practice this as well, right? How does the JEE mean after college? Sorry, sorry. I was just sorry for that. So logic gates. We're talking about logic gates again. So let us start for the first logic gate. The first logic gate that we have is the OR gate. So how do we write an OR gate? This. Basically, it's a curve like this and like this, right? So logic gate basically says the OR function, right? So how does it work? It is a union sign. So this can also be represented by a union sign. If we mean A plus B, and that is equivalent to A union B, and that is equal to A logic or logic B, right? इसका एक बार हम इनपुट और आउटपुट टेबल देख लेते हैं. जैसे कि 0 और 1 है तो उसका इनपुट दोनों तरफ 0 है, तो क्या होगा? आउटपुट 0. 1 है तो आउटपुट क्या होगा? 1. दोनों अगर 1 है तो. बट अगर 0 में और 1 में 1 में चूज करना हो तो इट कैन बी ईदर ऑफ दोज, और दोनों हो सकते हैं मतलब, राइट? दोनों हो सकते हैं इज द आंसर. सो दैट इज हाउ दिस लॉजिक गेट वर्क्स. उसके बाद सेकंड लॉजिक गेट में जाते हैं जो कि है एंड, राइट? सो एंड बेसिकली क्या है हमारा? ये वाला सिंबल, एंड दिस रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन. मतलब दोनों की सेटिस्फैक्शन जरूरी है. ऐसा नहीं है कि एक चीज सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी सेटिस्फाई ना हो तो चल जाएगा. यू हैव टू बी लाइक कि नहीं नहीं चलेगा. सो यू हैव टू बी only inclusive of the objects which or the things that are inclusive of both of those sets, right? इसका एक बार इनपुट और आउटपुट टेबल देखते हैं. जैसे कि 0 0 तो 0, 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 0,
एंड वन वन है तो वन। ठीक है, यू गेट एन आइडिया राइट, इस तेल डालने से, सॉरी, लाइक यू गेट एन आइडिया राइट दैट हाउ डू दे चेंज। सो नॉट गेट देख लेते हैं। नॉट गेट बेसिकली क्या होता है, किसी भी इनपुट को नेगेट कर देता है। सो वी टेक इनपुट इन टर्म्स ऑफ बाइनरी लैंग्वेजेस बेसिकली, हम इनपुट जीरो और वंस के टर्म में ही लेता है। और नॉट फंक्शन क्या करता है, उनको नेगेटिव या फिर उल्टे में कन्वर्ट कर देता है। नॉट नेगेटिव एग्जैक्टली बट दे चेंज दैट साइन। सो अगर जीरो है तो नेगेटिव करने पर या नॉट गेट लगाने पर वो वन हो जाएगा, और जीरो और वन है तो जीरो हो जाएगा। ऑलराइट, फिर नाउ वी हैव मल्टीपल, ये तो हो गए बेसिक्स ऑफ गेट्स। ठीक है, अगर ऐसा हो तो यू कैन लाइक गो थ्रू सम क्वेश्चंस एंड सॉल्व कि बेसिक ऑफ गेट्स कैसे सॉल्व होता है, कैसे नहीं होता है। सो इट कुड रियली ईज यू अप, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट दैट कम्स इनटू द लाइफ ऑफ दिस is the combination gates, right? So this is really something that you can learn from, और इसके ऊपर भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे गेट के ऊपर कि कैसे गेट्स का होता है इलस्ट्रेशन, और कुछ इनने रैंडम से बहुत सारे गेट्स लगा के दे दिए एंड यू हैव टू लाइक टेक आउट देयर range and domain. So that could be really tough because there always someone who like can miscalculate the numbers and use them for the use the numbers for the worst. So it is important to have a good computational, how should I place it, capacity for the computers to be able to work with and for you as well. So next gate पे आते हैं, NAND gate. NAND gate क्या होता है? AND gate, that is further preceded by a NOT gate. And why do we needed that? Because we require a different input for different, we require a different output for different input, right? So we can change that by creating a combination of horses, combination of different gates, and that would really change the way how we look to people. So sorry again, I'll say it is NAND gate, and NAND gate how does it work? देखते हैं, दो ए दो नॉट गेट और एक AND गेट। ठीक है, very important to understand, and also शायद से they have made the wrong, and I don't know why. So ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, पता होगा सबको ट्रूथ टेबल क्या होती है, राइट? ट्रूथ टेबल इज बेसिकली व्हेन यू टेक इनपुट्स एज इट इज एंड राइट द आउटपुट ऑफ द सेम। ठीक है, उसके बाद आता है नॉर के ऊपर। नॉर के अंदर क्या होता है? सो बूलियन एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। what they're trying to do here is first they take A into B, so that is the AND gate, and then if you take the inverse that also works, जैसे कि नीचे वाले केस में भी यही किया है, पहले और ले लिया एंड देन दे हैव टेकन अ नेगेटिव आउट, सो दैट आल्सो वर्क्स। ठीक, सो अब नेक्स्ट में आते हैं यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। सो एक बार पढ़ के देखते हैं, द NAND और द NOR गेट इज द यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक of our digital circuits. Repeated use of the NAND gate or NOR gate gives other gate. Therefore, any digital system can be achieved entirely from NAND and or NOR gate. We shall show how the repeated use of NAND or and a NOR gate will be gates will gives us different gates. सो वही है कि आप कोई भी कोई से भी लॉजिक गेट या का इलस्ट्रेशन नैंड और नॉर गेट से इजीली बना सकते हो। तो एक बार देखते हैं कि नॉट गेट कैसे बनाते हैं नैंड से, इस तरीके से बनाते हैं। एक एंड गेट कैसे बनाते हैं नैंड से, ऐसे बनाते हैं। यू गेट इनपुट कैसे डालना है और आउटपुट कैसे डालना है। सो अगर हम ये सेकंड वाला, सॉरी, सो इफ यू टेक द सेकंड केस कि एंड गेट कैसे लाए नैंड गेट से, तो देखो पहले तो अगर हम यहाँ पे इवन वर्क डालते हैं या फिर दोनों सेम आउटपुट्स डालते हैं, सो वी गेट द सेम आउटपुट।
right? And now we negate it, so we get opposites. And opposites का and या फिर वापस से वो डालना and डालना, we get the and result back. ठीक है, तो आई होप दिस क्लियर्स यू। आप उसके बाद वापस से और गेट कैसे बनता है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस वी हैव, नथिंग टू मच आउट ऑफ द बॉक्स। दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि कैसे वर्क करते हैं कैसे नहीं वर्क करते हैं। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर, just give me a minute. Acha, I'll give you some time to read it through, and I'll be getting back to the discussion. So just read the AND gate from NOR and OR gate from NOR, so you'll get an idea कि वो कैसे work करता है. Just give me a minute. Okay, so I hope you must have read it कि एक AND gate कैसे बनता है NOR से, और एक OR gate कैसे बनता है NOR से. So this must have really helped you guys. अब देखते हैं XOR और XNOR क्या होता है. तो an exclusive OR gate is the XOR gate, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है देख लेते हैं. तो इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है. XOR गेट ऐसा लगता है. ऑफन यू फाइंड दिस सिंबल इन प्लेस ऑफ XOR, बट इसका मतलब ये होता है, ठीक है. क्या करना होता है, दोनों का सम करना होता है, उसके बाद उसका नेगेटिव प्लस प्रोडक्ट उसका नेगेटिव. तो उसका आउटपुट देख लो तुम्हें क्या मिलता है एक XOR गेट का. फिर एक नॉर गेट देखते हैं. देखा. उसके बाद लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप समझ लीजिए. मतलब इट्स क्वाइट बेसिक बट समटाइम्स पीपल कैन मिस इट. तो इसको एक बार देख लेते हैं. और के फंक्शंस के लिए अलजेब्रा कैसे होता है. जैसे कि अगर मैं एक ए है, उसके अंदर जीरो ऐड करूंगा तो वो ए ही रहेगा. अगर ए के अंदर वन ऐड कर दूंगा तो हमेशा वन रहेगा, बिकॉज वन प्लस वन वुड ऑल्सो गिव मी वन, राइट, फॉर अ बूलियन, राइट. और ए प्लस ए वुड गिव मी अ ए. एग्जाम्पल ए की जगह जीरो लेके देखते हैं. जीरो प्लस जीरो गिव्स मी जीरो, और वन प्लस वन गिव्स मी वन इन टर्म्स ऑफ बूलियन. नेक्स्ट वी हैव एंड. एंड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है बेसिकली. अब कोई से भी नंबर को जीरो से करोगे मल्टीप्लाई तो जीरो रह जाएगा. वन से करोगे तो वो सेल्फ एज इट इज रहेगा. ए से करोगे तो भी वो एज इट इज रहेगा. कैसे, जीरो इंटू जीरो किससे जीरो, एंड वन इंटू वन गिव्स मी वन. उसके बाद वी हैव द नॉट का एडिशन सब्ट्रैक्शन. ए प्लस ए नॉट गिव्स मी वन. कैसे, जीरो प्लस वन गिव्स मी वन, वन प्लस जीरो गिव्स मी वन. तो दोनों वहां पे वैलिड है. उसके बाद वी हैव ए इंटू ए नॉट दैट इज इक्वल टू जीरो. जीरो वन, वन एग्जाम्पल लेते हैं. तो वी गेट जीरो एंड वन, उसका जिसका प्रोडक्ट जीरो होता है. अगर हम वन और जीरो लेके चलते हैं तो भी वी गेट अ जीरो प्रोडक्ट. Not talking about the cumulative, associative and the distributive laws. काफी सिमिलर टू मैट्रिसेस ही होता है. ए बी इज इक्वल्स टू बी ए. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव तो वेरी सिंपल, एंड द लेटर पार्ट इज आल्सो ओके.
तो उसके आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। कुछ अदर आइडेंटिटीज कैसी होती है, ये काफी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नाउ मूविंग ऑन, आउटपुट ऑफ और गेट क्या होता है वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, तो हम ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ए बी लेके चलते हैं पहले। अगर ए बी जीरो है तो और पे जाने के बाद क्या देंगे, जीरो देंगे। राइट, अब मैं उसको नैंड गेट के पास ले जा रहा हूँ। तो देखो, जीरो जीरो जाएगा पहले नैंड गेट में। तो जीरो इंटू जीरो वो गिव मी जीरो, और उसका नेगेटिव वन। सेकंड केस लेते हैं, वन जीरो। तो वन जीरो में क्या होगा, और के पास जाने पर क्या हो जाएगा, वाई डैश वन हो जाएगा। और वन जाएगा नैंड गेट में तो वन रहेगा, बट उसका उल्टा क्या होता है, जीरो, तो जीरो बन जाएगा। सिमिलरली फॉर जीरो वन। अब देखते हैं वन वन। वन वन का और क्या होगा, वन। और वन डालेंगे नैंड गेट में दोनों वन, तो क्या हो जाएगा, वन, और उसका उल्टा हो जाएगा जीरो। सो दिस इज what the two tables look like for gates. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The output of an OR gate is connected to both the inputs of a NOR gate. ठीक है, draw the logic circuit of the combination gates and write its truth table. सो हमें क्या दिया है, दो जो आउटपुट्स है, एक आउट जो आउटपुट है, उनको दोनों को नॉर के अंदर हमने इनपुट दे दिया है। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल बनाना है। तो लेट्स गो। अगर हम पहले जीरो जीरो देते हैं इनपुट, तो वाई डैश क्या बन जाएगा हमारा, जीरो, बिकॉज और गेट है। और जीरो हमने नॉर के अंदर डाल दिया। तो हम पहले जीरो का और करेंगे, तो यानी कि जीरो, एंड देन उसका नेगेटिव इज वन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव इज जीरो वन। जीरो वन का और क्या होगा, वन। वन वन और के अंदर डालूंगा तो वन आएगा, और उसका नेगेटिव जीरो। ठीक है, वही सिमिलर जो आगे हमने पहले किया था, सिमिलर आउटपुट्स वी गेट। नेक्स्ट करते हैं, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट्स मार्क्ड एक्स एक्स, राइट द आउटपुट एट वाई व्हेन ए इज इक्वल टू वन वन एंड। ठीक है, तो देखो, हमें पता है एक्स एंड है और वाई क्या है, नॉट गेट है। राइट, रिप्रेजेंटेशन, यू रिमेम्बर व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वाई एंड एक्स। काफी आसान सा, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ वी वोंट गो टू द डेप्थ्स ऑफ communication systems because it's not a part of it. We had switch a part of the syllabus. तो एक बार देखते हैं switch कैसे वर्क करता है. Do we have a theory of the questions of it? Just give me a minute. Okay, we don't. तो अभी हमने एक बार पढ़ा, उसको वापस देख लेते हैं. Then we'll do some questions. I hope everyone got gates, right? Gates कैसे वर्क करते हैं और transistors कैसे वर्क
So let's continue. We were discussing the semiconductors part, right? We had done the junction transistor कर लिया था and gates भी कर लिए थे, right? So now let's do some questions. I had just got some questions. So let's start with the questions. First question देखते हैं. For a common base transistor, the values of IE and IC are this respectively, then the value of IB is. बहुत easy है, हमें पता है कि ये equation होती है. This is valid for both. That IE is equals to IB plus IC. Right? You have to remember this. Next question is the mobility. This is not related to transistors or this. I'll just do those questions which are related to our topic that we studied earlier. So the fifth question is the emitter current for which IB is equals to, sorry, I'm reading IB. So IB is equals to 20 this and beta is equals to IC by IB. Very easy to remember. तो यहाँ पे 100 दे रखा है, हमें IC की वैल्यू निकालनी है. IB क्या दे रखा है? 2 into 10 to the power minus 6 amperes. Well, that's micro, right? So what do we are left with? 2000 milliamp, sorry, 10 to the power minus 6. So 2 milliamperes, right? तो ये तो हमारा क्या हो रहा है कलेक्टर वाला. तो collector plus basis are emitter current. So we got this again. We have a similar question on based on formula, so we leave that. Do we have any question or gates? Gates के ऊपर कोई question होगा तो हम वो करने की कोशिश करते हैं. Yes, we do have. Explain how OR gate is realized using a NAND gate. बेसिकली हमें दिखाना है कि हमें एक NAND गेट, एक और गेट बनाना है NAND गेट के इस्तेमाल से. तो देखो क्या होता है. अब हमें पता है कि हम अगर NAND गेट के अंदर A इनपुट देंगे as 2 of its input, तो we get this, right? एक बार सॉल्व करके देखते हैं. इसी को मैं NAND गेट के अंदर 0 0 डालूंगा. तो 0 0 का AND कितना होता है? 0 and the reverse is 1. So I get A dash. Now let's take 0 1. So let's take 1. So 1 1 डालूंगा तो एंड क्या मिलेगा 1 और उसका उल्टा 0. तो आई गेट ए डैश. सो अगर ए डालेंगे पर ए डैश मिलेगा और बी डालने पर बी डैश मिलेगा. इफ आई एम नाउ पुटिंग ए डैश बी डैश इनटू अ NAND, व्हाट वुड आई गेट? अ ए प्लस बी. ये देखो, राइट? So this is another AND gate question that I had to solve. So I hope this is more than sufficient, guys, for you. अगर और questions करना है तो we can like do more transistor questions. This is a very formula based questions. The topic we're studying today is very formula based and logic based. इसलिए बोलते भी उनको logic gates है because they are just simply working on a simple logic of and, nor, XOR, and of similar domains. So we have time, so we can do some more questions like this. If an NPN transistor circuit, the collector current is 10 milliamperes, and if 95% of the electrons emitted reach the collector, what is the base current? तो देखो, अगर 90, देखो NPN, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट NPN ट्रांजिस्टर, तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. तो उसने बोला 95% इलेक्ट्रॉन emitted रीच द कलेक्टर. मतलब आईसी जो है, आईसी का जो करंट है वो 95% है एमिटर करंट के. It is their way of saying it this. And now I have to calculate the base current, right? So we'll use the formula. Which formula? That IE is equals to IB plus IC. Right? So I know it would be equal to 95% of IE plus IB is equals to IE. So my IB, what current has been given to me? Collector current has been given to me. So my IB becomes 5% of IE. This is my 5. Bear with my handwriting, guys. I'm really sorry. So my IE निकालना है हमें. So IE is basically 10 milliamperes into 100 by 95, right? And I have to calculate IB. So 500
and our E value is 10 milliamperes into 100 by 95. So 100 and 100 just cancel, 5, 19. So my IB becomes 10 by 19 milliampere, right? So let us check the value. What is 10 by 19? Where's my calculator? So 10 by 19 is around the answer that has been given to us. Yes, it is 0.526, which is this. So we are right. Okay. Do we have any other question on related to this? We have the second example that we can do. तो JEE advanced का question है तो क्यों नहीं दिखता है? What does it say? So the base current is 100 micro amperes. Collector current दे दिया हमें 3 milliamperes. अल्फा हमें पता है collector is this. बीटा हमें पता है ये होता है और हमें आई ई की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी. अगर ये माइक्रो है तो 0.1 मिली एम्पियर होगा प्लस 3 मिली एम्पियर तो 0.1 मिली एम्पियर है हमारा एमिटर करंट. और मुझे कलेक्टर करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा 3/3.1 और यहाँ पे 3/0.1. तो इसकी वैल्यू हमें देखते हैं क्या है. 30 हो जाएगा हमारा बीटा और ये हो जाएगा हमारा अल्फा. ठीक. Now, do we have any better questions to solve, guys? Tell me there are better questions to solve. We can do this one. You are given the circuit, write the two table and identify the logical operations and carry out the circuit or the logical symbols. So let's do the 30th question. That seems nice. You are solving logic gates, right? Let me just see the time also, how much time is left with us. Okay, we still have time. So let us go with this question. So देखो. Let's take, we already have a not here or what? No, we don't, right? So let's take A, B, and let this be F. So this is basically a not function. मैं तो दिमाग नहीं लगाती देखो. यहाँ पे हमें मिल रहा है this and this, right? So देखो हमें पता है 0 A में हमने A भी लिख लेता है 0 0 1 0 0 1 1 1. तो फर्स्ट केस के अंदर हमें क्या मिलता है. हमारे फर्स्ट इनपुट्स क्या हो जाएंगे 1 1 0 1 1 0 एंड 0 0, राइट. एंड नाउ मूविंग ऑन हमारे पास क्या है और उसके बाद एंड है तो नॉर है. हमारे पास एक नॉर करके दूसरा है. तो नॉर कैसे करेंगे 1 + 1 gives me 1 एंड उसका उल्टा है 0. 0 + 1 is 1 एंड उसका उल्टा है 0. 1 + 0 is 1 एंड उसका उल्टा है 0. 0 + 0 is 0 and उसका उल्टा is 1. So we have this two table. Let's see. It is 0 0 1. 30th का आंसर क्या है. Where is my two table? Do we have a 30th question solution? Yes, it is 0 0 1. So let us move on to the next logic gate question because we are solving logic gates, right? Just give me a minute, I'll be back. I just have to use the washroom. Um, let's I just give you a question to do it by yourself.
Try doing the 27th question and we'll get discuss this in a minute. Just give me a minute. Okay, so did you solve the question, the 27th question? No? So let's solve it by ourselves. Let me erase the previous solution. Okay, let us write A, B, P, Q, and X, right? So you know what I'm trying to do here, right? So let's say 0, 0, 1, 0, 0, 1, and 1, 1. So after P, what do I get? Is I'm saying. So let me write, let's avoid this. Let this be M. And this is already giving me X, right? So let's just write M here. Okay. This is my M. Q is nothing basically. I wrote it by mistake. So देखो जो first हमारा ये गेट है क्या है NAND गेट है और ये क्या गेट है और गेट है. So let's solve. 0 0 का NAND गेट क्या होता है? Let's solve. 0 0 का AND हो जाएगा 0 और उसका NAND हो जाएगा 1. Then 0 1 का AND होगा 0 उसका नेगेटिव होगा 1. 0 1 का नेगेटिव AND होगा 0 उसका नेगेटिव होगा 1. 1 1 का AND होगा 1 उसका नेगेटिव होगा 0. ठीक है. अब हमें देखना है हमारे पास ये दो इनपुट है और के अंदर. 0 1 का और इज 1, 0 1 का और इज 1, 1 1 का और इज 1, 0 1 का और इज दिस. यू गेट द वैल्यू 27 के लिए चेक करना है. यस. एक्स इज ऑलवेज 1 1, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस वी ऑलरेडी डिड. ओके सो if we try to do the next, this all about 21st question as the last question, and then I'll wrap up the questions. The point is, it is very theoretical topic. There's not much questions available on the topic. So I'm trying to just squeeze in the time and the questions that are possible to be solved. देखते हैं हमें input दे रखा है और भी और आपको inverted by using two NOT gates and their output are fed to a NOR gate as shown below. So this is a OR gate first of all. उसके बाद और है और एक NOR gate है basically. तो अगर हम उसको एनालाइज करना है देखो 0 0 का और गेट हमें 1 दे 0 देगा और 1 देगा तो हमें यहाँ पे A और B ही मिलेंगे और के अंदर, राइट. And now if we are giving this to a NOR gate, so it's basically a NOR gate, nothing else. So I'm just wrapping up the session for you guys because I'm not seeing a much of potential or much of questions in the exercise that I had planned through. We can do this one if you want, but then it has frequency it is in it and we have not solved frequency today. We can do this question. This is nice. Let's go to 19 question. So हमें पहले दिया हुआ है AND gate, AND को NAND gate किया है. So we have an AND answer, right? Okay, so let us just solve the output and see. यहाँ पे अगर हम 0 0 लेते हैं
तो 0 0 1 1 का 0 1 होगा, उसका उल्टा कितना होता है? तो 0 डालने पर मुझे मिलेगा 1, 1 डालने पर मिलेगा 0. It's a not gate. 19 is A. Let us see what is 19's answer. Yeah, it is A. It is a not gate. Because we have the same input, right? Input also matters here. So I'll just wrap the session up by this question and we'll have discussion in the future, right? So thank you guys. Bye.